Law of conservation of momentum. You know the definition of the momentum. Momentum simply means mass in motion. Law of conservation of momentum states that total momentum of two or more objects acting upon one another will not change, provided that there are no external forces acting upon them. In simple words, the total momentum of the two objects before collision will be the same as the total momentum after the collision. Suppose these two objects are moving in the same direction with different velocities, having different masses. The mass of the object A या जो लार्जर ऑब्जेक्ट है फर्ज करें उसका मास m1 है और वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. The mass of the smaller object is m2 and it is moving with the velocity u2. You know that the momentum is the mass times velocity. The momentum of the larger object will be m1 u1 and the smaller object will be m2 u2. The total momentum will be m1 u1 plus m2 u2. Suppose these two objects collide with each other and after the collision their velocities will change. The velocity of the larger object will become v1 and that of the smaller object will be v2. These both objects applied forces on each other. F1 और F2 फोर्सेस वो दोनों अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पे. F1 लार्जर ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे. एज अ रिजल्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ लार्जर बॉल पे फोर्स लगा रहा है. यू नो दैट एज हमने कहा है कि वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं. अब वेलोसिटीज़ चेंज होती हैं डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma. अब एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हुआ है तो हमारी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी. F1 विल बी m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t and F2 will become m2 into v2 minus u2 divided by t. As you know the Newton's third law of motion, it states that every action has an equal but opposite reaction. So F1 will become minus F2. So F1 is equal to minus F2. Putting the values of F1 and F2 in the equation, m1 v1 minus u1 divided by t is equal to minus m2 into v2 minus u2 divided by t. By rearranging the equation, t को दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी. m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus m2 v2 plus m2 u2. By rearranging this equation we can write m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. अब इसको अगर हम मज़ीद रीअरेंज करें तो हमारे पास कैसा रिजल्ट आएगा. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This was the new law of conservation of momentum. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. आपने देखा कि किस तरह दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम सेम रहता है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन. थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू माई चैनल.